Assalamu alaikum, beta. In this video lecture, I will continue antifungal drugs. In the previous video lecture, I delivered you about amphotericin B and 5-flucytosine. Let's continue the remaining part. So, beta, in this remaining part, you will see at number 3 the azole antifungals. Okay, the azole antifungals, and this is really important part of this lecture. This is a bit lengthier, so let's start with this azole antifungals. Beta, azole antifungals are classified into two categories. Okay, one are imidazoles and one are triazoles. Okay, one are imidazoles and one are triazoles. Look, both the classes of antifungals, they have same mechanism of action, uh, and probably their spectrum is a little bit similar to each other. Okay, but the difference between both the classes is they have different pharmacokinetics and their therapeutic uses are a little different. Okay, so the main thing about the two classes of azole antifungals is the mechanism of action of both these classes is same, and their spectrum is also very much similar to each other. That means they cover same type of bacteria. Okay, but their pharmacokinetics, that means their form of availability and their metabolism is different. Okay, so now let's see the two classes of azole antifungals. One is imidazoles and one are triazoles. Okay, right. So beta, these two categories, imidazoles and triazoles, you see, we will discuss here the triazoles because we are now covering the drugs for antifungal drugs uh, which are for fungal infections, which are systemic, okay, and subcutaneous. But this imidazole category is applied topically for cutaneous fungal infections. We will surely discuss this imidazole category of antifungals in the next part, obviously, where we will cover the antifungal drugs that are completely for cutaneous infections. The reason why we have to discuss only this here is we are now covering what portion? The antifungal drugs completely which are completely for mainly for systemic infections. Okay, so look, the triazoles are administered systemically by either oral route or IV route for treatment or prophylaxis of cutaneous and systemic mycosis. Okay, but this imidazole category of azole antifungals is only for cutaneous infections. Okay, so let's start. Beta, this triazole category of azole antifungals, it includes this list of drugs. Okay, it includes fluconazole, itraconazole, posaconazole, voriconazole, and isavuconazole. Right? These at least, okay, 5 drugs are there in this triazole category. Okay, and I again repeat that triazoles are not only for cutaneous fungal infections, but they are also for, look, they are not only for cutaneous fungal infection, they are also for systemic fungal infections as well. But this category is only for skin infections of fungus, cutaneous infections of fungus. So okay, as I mentioned, that all these drugs in triazole category, or even some even the imidazoles, they all have same mechanism of action. Okay, the mechanism of action of all these drugs is same, but their spectrum is little different, which we will talk about that in when we will be discussing each drug separately. Okay, so let's see the mechanism of action of these drugs. So you see the mechanism of action, that these drugs are fungistatic. That means these drugs do not completely kill the fungal cell, but they reduce the activity function of the fungal cell, so that the activity and the parasitic nature of the fungus is almost reduced to zero. Okay, yeah. What is the mechanism of action? That these azole antifungals, whatever it is, it may be uh, imidazole, it may be
imidazole, or it may be what was another category, triazole. Okay, it may be imidazole or maybe triazole. So what do they do? They inhibit 14 alpha demethylase enzyme. It is a cytochrome P450 enzyme of the fungus. अच्छा, पहले हम देख लें कि ये एंजाइम करता क्या है। नॉर्मली ये जो बेटा एंजाइम है 14 अल्फा डीमिथाइलेस, ये एंजाइम नॉर्मली क्या करता है, फंगल सेल के अंदर लेनोस्टिरोल को अर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट करता है। और अर्गोस्टिरोल मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कि बहुत ज़बरदस्त कंपोनेंट है फंगल सेल मेम्ब्रेन का। और ये जो अर्गोस्टिरोल होता है ये फंगल सेल को इंटीग्रिटी देता है, परमेबिलिटी मेंटेन करता है। सो अर्गोस्टिरोल इज़ लाइक कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन, या बट व्हेन यू प्रोवाइड द पेशेंट विथ एजोल एंटीफंगल्स, then these azoles do what? They inhibit this enzyme 14 alpha demethylase enzyme. This 14 alpha demethylase enzyme, when inhibited, there will be no demethylation of लेनोस्टिरोल to अर्गोस्टिरोल। ठीक है, तो मैं यही बात थोड़ा आसान अल्फाज में यहाँ क्विकली समझा दूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये आपका बेटा फंगल सेल है, ये कौन है, ये फंगल सेल है, और आई होप इट इज़ विजिबल, दिस इज़ फंगल सेल। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो लेनोस्टिरोल है वो कन्वर्ट होता है अर्गोस्टिरोल में बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, 14 अल्फ़ा डीमिथाइलेस एंजाइम। ठीक है, जब आप एजोल एंटीफंगल्स देते हो तो वो एजोल एंटीफंगल्स क्या करती हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से अर्गोस्टिरोल नहीं बनता। ठीक है, और जब अर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा तो फिर आपको पता है बेटा क्या होगा, जब अर्गोस्टिरोल की बायोसिंथेसिस कम हो जाएगी तो फंगल सेल मेम्ब्रेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, फंगल सेल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन सब कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है फंगस का उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से। ओके, नाउ हाउ कैन द फंगस डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स? ये तो बहुत बुनियादी बात है बेटा, किस तरीके से फंगस जो है रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। दो तरीके हैं। ये देखें, ये बेटा ये फंगल सेल है ना, अगर ये फंगल सेल क्या करे कि ये जो एंजाइम है 14 अल्फ़ा डीमिथाइलेस, इसको म्यूटेट कर दे, इसको स्ट्रक्चरली चेंज कर दे, तो क्या आपके एजोल एंटीफंगल्स इसको फिर इनहिबिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से फंगस जो है रेजिस्टेंस डेवलप करता है। और दूसरा तरीका रेजिस्टेंस डेवलप करने का ये है कि ये जो फंगल सेल है वो कुछ इफ्लक्स पम्प्स बनाता है। अगर ये समझ लें आप, ये एजोल एंटीफंगल्स हैं जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं, तो फंगल सेल क्या करता है, यहाँ पे कुछ समझ लें, ये इफ्लक्स पम्प्स बनाता है। ये इफ्लक्स पम्प्स क्या करते हैं, इन ड्रग्स को उठा के सेल के बाहर किक आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से फंगल सेल रेजिस्टेंस डेवलप करता है अगेंस्ट what beta, against these azole antifungals. Okay, what are the two ways I mentioned? Number one, ये जो एंजाइम है बेटा 14 अल्फा डीमिथाइलेस, इसमें म्यूटेशन कर देता है, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम है स्ट्रक्चरली चेंज हो जाता है, और फिर ये एजोल एंटीफंगल्स इस पर नहीं लग पाती, इसको इनहिबिट नहीं कर पाती। दूसरा तरीका मैंने बताया कि इफ्लक्स पम्प्स, फंगल सेल क्या करता है, इफ्लक्स पम्प्स बनाता है, जो कि क्या करते हैं, इन एजोल एंटीफंगल्स को सेल से उठा के बाहर किक आउट कर देते हैं, और फिर ये ड्रग काम नहीं करती और फंगल जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस नहीं होती। ठीक है, दिस इज़ हाउ फंगस कैन डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट azole antifungals. Yeah, okay, so now let's continue. Let me just quickly change the page. Okay, now let's see some drug interactions and contraindications. Beta, whatever azoles they are imidazoles, they are triazoles, whatever they are. Two classes are there, na? One is imidazole, one is triazole. Okay, they all are teratogenic and they should be avoided in pregnancy. Okay, they all are teratogenic and should be avoided in pregnancy. अच्छा, जो भी azoles है ना, चाहे imidazoles चाहे triazoles, they all are inhibitors of cytochrome P450 enzyme, specifically 3A4 cytochrome P450 3A4 enzyme in the liver. तो अच्छा, ना सिर्फ एजोल जो एंटी फंगल्स हैं वो इस एंजाइम के इनहिबिटर्स हैं एज पर योर लिपिन कॉर्ड, दूसरी जो ड्रग्स हैं जो कि इनहिबिटर्स होती हैं बेटा साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम की,
for example ritonavir. And the drugs which are inducers of cytochrome P450 enzyme are rifampin and phenytoin. Okay, so beta what did I just say is एजोल एंटीफंगल्स जो हैं लिवर में जब जाती हैं मेटाबोलाइज होने के लिए तो कौन से एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं? साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, साइटोक्रोम P450 भी कौन सा? स्पेसिफिकली 3A4। अच्छा, एजोल एंटीफंगल्स के अलावा कौन सी दूसरी ड्रग्स हैं जो कि साइटोक्रोम P3A4 को इनहिबिट करती हैं? राइटोनाविर। ओके, अच्छा, कौन सी ड्रग्स हैं जो कि साइटोक्रोम P3A4 को इंड्यूस करती हैं? दैट आर rifampin and phenytoin. Okay, now let's beta start the triazols. मैं दोबारा बात बता दूं बेटा, दो तरह के एजोल्स होते हैं। ठीक है, एक इमिडाजोल्स, if I am not wrong, just a second, imidazoles and triazoles. Again, let me show you. Here we go. Two classes are there, imidazole and triazole. Now what we will do, we will start all these drugs in this triazole category. Okay, one by one. Right, so let's start with number one drug, fluconazole. Yeah, fluconazole is one of the triazoles. Let's now see. Okay beta, Fluconazol is very first triazole. छः triazole से हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, out there are 6 triazoles which we will discuss, but Fluconazol is very first triazole. And by the way, all the triazoles, they are synthetic. So fluconazole is also synthetic. Okay, fluconazole is also synthetic. All 6 triazoles which we will talk about, they all are synthetic. And fluconazole is the very first triazole. Right? अच्छा, लेकिन अब मसला ये है फ्लूकोनाजोल का कि ये 6 के 6 ट्रायाजोल्स में से सबसे लीस्ट एक्टिव ड्रग है, लीस्ट एक्टिव ऑफ ऑल ट्रायाजोल्स। राइट, और इसका स्पेक्ट्रम भी लिमिटेड होता है, ये कोई बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रायाजोल्स विच वी विल टॉक अबाउट। क्या स्पेक्ट्रम है इसका, क्या क्या कवर करती है? अच्छा, लेट्स सी। कुछ डायमॉर्फिक फंगाई को कवर करती है, लेकिन इसका जो ज़बरदस्त कंपोनेंट है जिसको ये कवर करती है वो ईस्ट है, जैसे कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स और कैंडिडा के इन्फेक्शंस। कैंडिडा चाहे एल्बाइकन्स हो, चाहे कैंडिडा पैरासाइलोसिस हो। ठीक है, कैंडिडा अल्बाइकन्स से बहुत इन्फेक्शंस होते हैं बेटा, जैसे कि वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस हो सकती है, कैंडिडा अल्बाइकन से म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस होती है। तो इन केसेस में बेटा फ्लूकोनाजोल इज़ गुड लुकिंग ड्रग। ओके, ईस्ट के अलावा व्हाट एल्स योर फ्लूकोनाजोल कवर्स? Okay, this fluconazole can be given as prophylaxis against invasive fungal infections in recipients of bone marrow transplant. बेटा, जब आप bone marrow transplant लगवाते हैं तो by that time you are immunocompromised ना, by that time you are immunocompromised when you have an organ transplant in your body. So an individual who is immunocompromised, he is always at risk of developing अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस। तो अगर मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट लगवाया है तो मैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज हूँगा ऑब्वियसली, और मैं ज़ाहिर है जब इम्यूनो कम्प्रोमाइज हूँ तो अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस मुझ में आ सकते हैं और इन्फेक्शन करा सकते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए मैं क्या लूँगा? फ्लूकोनाजोल लूँगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका स्पेक्ट्रम है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इन दिस लेक्चर इज़ फ्रॉम योर लिपिनकोट फार्माकोलॉजी। ओके, A little about फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ फ्लूकोनाजोल। ये ड्रग जो है ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है बेटा और आईवी फॉर्म में भी अवेलेबल है, और एक कम्प्लीटली ये ड्रग यूरिन से एक्सक्रीट होती है। ठीक है, अच्छा, और
मैंने जैसे कहा कि ये ड्रग, इस ड्रग का कोई रोल नहीं होता इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्परजिलोसिस एंड जाइगोमाइकोसिस, क्योंकि ये बहुत इसका स्पेक्ट्रम लिमिटेड है। ये सिर्फ कुछ ईस्ट को कवर करती है, कुछ डायमॉर्फिक फंगाई को, और इसका कोई रोल नहीं है एस्परजिलोसिस और जाइगोमाइकोसिस के इन्फेक्शन में। सही। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो एडवर्स प्रोफाइल भी इज़, आई थिंक इट इज़ गुड लुकिंग एडवर्स प्रोफाइल, नो सच सीरियस साइड इफेक्ट like nausea, vomiting, headaches, and skin rashes. So adverse profile is okay, pretty good, and not really worse adverse profile. Okay, let's come to number 2, triazole. Number 2 triazole is, let's see, I hope visible to everybody. Okay, so number 2 triazole is itraconazole. Okay, so beta itraconazole, मैंने जैसे कहा कि सारी ट्रायाजोल सिंथेटिक हैं, तो ये भी सिंथेटिक ट्रायाजोल है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एज़ कम्पेयर टू फ्लूकोनाजोल. ओके, कंपेयर टू फ्लूकोनाजोल. दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, पेराकोक्सीडियो आइडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लास्मोसिस. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है बेटा कि इफ़ यू कंपेयर फ्लूकोनाजोल विथ आइट्राकोनाजोल, आइट्राकोनाजोल का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ब्रॉड है. ठीक है, बहुत वर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो सकते हैं, जैसे कि ब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, दिस पेराकोक्सीडियो आइडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लास्मोसिस, सीवियर लंग इन्फेक्शन ऑफ द फंगस, itraconazole is really good against these nasty fungi. Okay, and rarely this drug can also be used for candidial infection and aspergillus infection. ठीक है, तो ये तो आपको बेटा ये चीज़ें, ये फंगल स्पीशीज़ याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, लेकिन इतना आपको ज़रूर पता चला बेटा कि आइट्राकोनाजोल का स्पेक्ट्रम बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू फ्लूकोनाजोल. राइट. अच्छा, इसकी कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं. तो बेटा ये जो ड्रग है वो सिर्फ ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, आईवी फॉर्म में अवेलेबल नहीं है. औरल कैप्सूल की फॉर्म में, औरल टेबलेट की फॉर्म में, और औरल सॉल्यूशन की फॉर्म में. ठीक है, एंड जो इसका कैप्सूल और टेबलेट होता है, दिस शुड बी टेकन विथ फूड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन. ठीक है, हाई पीएच पे, अल्कलाइन पीएच पे इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती. ओके, राइट. सो okay, so as I mentioned, it should be taken with food to increase its absorption. जब आप फूड लेंगे बेटा, ज़ाहिर है तो HCl प्रोडक्शन होगी और pH कम हो जाएगी आपके स्टमक में, तो उसमें इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है, इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म बेटा लिवर में होता है. सही है, और इसकी एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन में भी हो सकती है, और कुछ पार्ट इसका फीसिस में भी एक्सक्रीट आउट होता है. ठीक है, it is not like fluconazole which is completely excreted in urine. This drug is metabolized in liver and excreted in a part in urine and a part in feces. Okay, so this is how this drug is metabolized in the, actually it is metabolized in liver and excreted by some part in urine and in feces. And if we talk about the adverse effects of the drug, then it includes liver toxicity. So this is a hepatotoxic drug, so make sure you do not provide this drug with any other hepatotoxic drug. Right, so this is a drug which causes liver toxicity, especially when you give this drug with other hepatotoxic drugs. Right, and also this drug has got negative inotropic effect on the heart. Right, so it reduces the heart rate actually. So be careful when you are giving this drug, and actually it should be avoided in patients with heart failure and ventricular डिसफंक्शन. तो बेटा हार्ट फेलियर का पेशेंट हो या वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन का पेशेंट हो, इसमें जो कार्डियक जो रेट होता है, हार्ट रेट होता है, वो वैसे ही कम होता है,
और अगर आप ऊपर से ऐसी ड्रग देंगे जो कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कराती है तो हार्ट रेट और कम हो जाएगा और हार्ट फेलियर के चांसेस मज़ीद इंक्रीज हो जाएंगे और इट विल बी एग्जर्बेटेड, राइट। अदर एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड nausea, vomiting and skin rashes. Yeah, what are those? Just a second, there we go. Nausea, वॉमिटिंग एंड स्किन रैशेस, और उसके अलावा हाइपोकलीमिया, राइट। ओके, so now there is a little question for you boys, that hypokalemia is the side effect of another drug we discussed in the previous audio. So if you are listening to this audio right now, just stop this video, comment down and tell me which was the drug in the part 1 that was causing hypokalemia, right? And okay, other than hypokalemia, there is hypertension. Also mentioned in the comments the drug which was causing hypotension in the previous video lecture. Okay, edema and headaches. Okay, so beta, this is all about itraconazole, right? Itraconazole. Let's talk about drug number 3 in this triazole category. After fluconazole and itraconazole is Posacconazol, right? And this Posacconazol is fluconazole and itraconazole. It is also a synthetic triazole and it has broad spectrum, right? And itraconazole was also a broad spectrum antifungal. Fluconazole was having a limited spectrum. Just for recap purpose, Posacconazole is structurally similar to itraconazole. You need to keep it in your mind, okay? This is very important thing. Structurally, Posacconazole is similar to itraconazole. Beta, Posacconazole is available in oral forms and IV form. Oral suspension में भी, oral tablet में भी और IV form भी. Fluconazole was also available in oral as well as IV form, but itraconazole was only available in oral form, right? And this Posacconazole is used for the, इसका अगर हम spectrum देखें तो it is used for the treatment and prophylaxis of number 1 invasive candidiasis and aspergillus infections. Okay, aspergillus infections and invasive candida, और उसके अलावा other invasive fungal infections like schistosporium and zygomycetes. ठीक है, so all the invasive fungal infections like invasive candidiasis, invasive aspergillus infection and invasive other fungal infections like schistosporium and zygomycetes, right? Okay, so this seems to be a very good spectrum, right? If we talk about the pharmacokinetics of Posacconazole, then you see it has low oral bioavailability. बेटा इसकी जो bioavailability होती है वो बहुत low होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको food के साथ दिया जाए ताकि इसकी absorption इंक्रीज हो जाए. बायोअवेलेबिलिटी तो बहुत बेटा बेसिक साइंस की टर्म है. बायोअवेलेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस इनटू ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, ओके, or simply the amount of drug which reaches into your blood is बायोअवेलेबिलिटी. तो बेटा अगर हम इसको एम्प्टी स्टमक पे देंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी. ओके, सो दिस ड्रग भी शुड बी गिवन विद फूड. अगर आप फूड के साथ देंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, ठीक है, और बायोअवेलेबिलिटी भी बेहतर होगी. This drug is not metabolized typically by cytochrome P450 in the liver, but this drug is metabolized in the liver by glucuronidation, by the UGT, glucuronidase enzymes. Okay, and अच्छा, अगर बेटा आपने इस ड्रग को पीपीआईज के साथ दे दिया तो भी इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो पीपीआईज होती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो क्या करती हैं, एसिड प्रोडक्शन को कम कर देती हैं. जब एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो पीएच अल्कलाइन हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होती. इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है एसिडिक एनवायरनमेंट में, तभी तो हम इसको फूड के साथ देना प्रीफर करते हैं, ठीक है. सो वो ड्रग्स जो कि गैस्ट्रिक पीएच को इंक्रीज़ करती हैं, अल्कलाइनिटी की तरफ लेके जाती हैं, जैसे पीपीआईज, उन ड्रग्स के साथ पोसाकोनाजोल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर ज़ाहिर है अल्कलाइन एनवायरनमेंट में पोसाकोनाजोल की एब्जॉर्प्शन
डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रग इंटरेक्शन। बेटा योर पोसाकोनाजोल इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम P3A4। इट इज़ अ साइटोक्रोम P450 एंजाइम का वेरिएंट। तो बेटा जब आप ये पोसाकोनाजोल देते हो तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, और इस एंजाइम के इनहिबिट होने से दूसरी ड्रग्स जो हैं ये सारी ये सीरम में बढ़ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो अर्गट अल्कलॉइड्स हैं या एट्रोवास्टैटिन, ये एक स्टैटिन है, सेटेलोप्राम, और उसके अलावा या राइसपेरिडोन, सेटेलोप्राम, एट्रोवास्टैटिन और ये अर्गट अल्कलॉइड्स, ये सारी ड्रग्स जो हैं इनको नॉर्मली मेटाबोलाइज करने के लिए लिवर में साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पोसाकोनाजोल दी हुई है तो ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज पोसाकोनाजोल इज़ अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम. So when this enzyme is inhibited and you also simultaneously give these drugs, so because this enzyme is inhibited, these drugs will not be metabolized in the liver and its concentration in the serum will be increased, and these drugs will produce toxicity. So this is a very important exam question, the drug interactions of posaconazole, right? So the drug interactions of the posaconazole include that Posacconazol is inhibitor of cytochrome P450, especially 3A4, right? And these drugs are increased as a result in the serum. Okay. Okay. So number 4 is Voriconazol, right? Voriconazol, like all other triazoles, it is a synthetic triazole, right? And it is a broad spectrum antifungal. All antifungals, sorry, all triazoles are broad spectrum except fluconazole I mentioned earlier, and this drug is available in oral and IV form. Okay, only I remember itraconazole was the drug which was only available in oral but not in IV form, right? If we look at the spectrum of this voriconazole, you can read in the video beta that this is used for the treatment of some serious infections like aspergillosis, invasive candidiasis, some other serious invasive infections like infection of scudosporium fungus, fusarium species, right? These are very nasty boys, right? And voriconazole is really effective against these fungi, right? And you can see that we were using amphotericin B against aspergillosis. Earlier in the first part you saw we were using against aspergillosis amphotericin B antifungal, but voriconazole is much effective than amphotericin B for the treatment of invasive aspergillosis. So amphotericin B has been now replaced with voriconazole for the treatment of invasive aspergillosis, right? Okay, let's have a look at some pharmacokinetics of this drug. That this drug is metabolized in the liver by cytochrome P450 enzyme, specifically its variants like 2C19, 2C9, 3A4. If you even do not, remember this thing and you just keep in your mind that this drug is metabolized in liver by cytochrome P450, that's enough, okay? And this drug is excreted in urine, and that's it. And if we talk about the adverse profile of this drug voriconazole, then it's not really good drug because it has some serious adverse effects like visual and auditory hallucinations. I hope beta you have some idea about the hallucinations. Okay, let me tell you in nutshell that visual hallucinations means you can see something which is not actually there. And auditory hallucinations means you can hear something, some sounds which are not actually there. So this is auditory hallucinations, and I think that's not a good thing caused by voriconazole. Other number 2 adverse effect is hepatotoxicity, right? This drug is producing some hepatotoxicity, right? Be careful. And also it has some serious drug interactions. So with voriconazole, these drugs are contraindicated. Some anti-TB drugs like rifampin and rifabutin, carbamazepine, and this is sort of herbal medication, St. John's wort. This has its own benefits. This is a really good herbal medication, but be careful. You cannot use voriconazole with these drugs.
This is an absolute contraindication. Why? Because voriconazole is the drug which actually inhibits the enzyme which is required for the metabolism of these drugs. So if these drugs are not metabolized, they will remain in serum, their concentration will go pretty high, and they will produce toxicities, right? This is voriconazole, right? Now let's talk about number 5, triazole. Beta, at number 5 is isavuconazole. It is a broad spectrum antifungal, just like other triazoles. Fluconazole is, by the way, not broad spectrum, by the way. Okay, this drug is given in oral or IV form, right? लेकिन ये ड्रग जब बेटा हम देते हैं तो प्रो ड्रग की फॉर्म में देते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं देते। ये जो प्रो ड्रग है बेटा, जब आप ये ड्रग जब ब्लड में पहुंचती है, ये प्रो ड्रग जब ब्लड में आती है तो ब्लड में आने के बाद ईस्ट्रेसिस एंजाइम की मदद से ये ड्रग जो है वो प्रो ड्रग से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक्टिव आइसाविकोनाजोल में। इस ड्रग का स्पेक्ट्रम बहुत ज़बरदस्त है, जस्ट लाइक वोरिकोनाजोल। ये एस्परजिलोसिस को कवर करती है, मिकोरमाइकोसिस को कवर करती है, ठीक है। सो गुड लुकिंग स्पेक्ट्रम इट हैज़। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें बेटा, तो ये ड्रग जो है मेटाबोलाइज होती है लिवर में बाय द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, स्पेशली 3A4 और 5, ठीक है। और ना सिर्फ साइटोक्रोम P450 बल्कि ये UDGs जो होते हैं ना, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेसिस एंजाइम, दे आल्सो आर इन लिवर एंड दे आर along with cytochrome P450 metabolizing isavuconazole, ठीक है बेटा। isavuconazole is the inhibitor of cytochrome P450 3A4। तो बेटा जब ये आइसाविकोनाजोल इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी तो जो दूसरी ड्रग्स हैं जो इस एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रही थी वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगी और वो सीरम में रहेंगी वो ड्रग्स और उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसका एडवर्स प्रोफाइल बेटा बहुत अच्छा एज़ कम्पेयर टू आइसाविकोनाजोल, इट हैज़ गुड प्रोफाइल। एडवर्स प्रोफाइल आप देखें, सिर्फ नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड अ लिटिल हाइपोकलीमिया, right? This is about isavuconazole and this is all about triazoles, okay? Okay, beta, now after getting done with all those five triazoles, here is the summary of all 5 triazoles. You look at the spectrum. Fluconazole, as I mentioned so many times in the lecture, it has narrow spectrum. एट्राकोनाजोल का कुछ बेहतर है, एंड देन आइसाविकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, दे ऑल आर हैविंग रियली गुड लुकिंग स्पेक्ट्रम, ओके, अगेंस्ट फंगाई। अच्छा, किन फंगाई के खिलाफ ये एक्टिव होती हैं वो तो बेटा हमने लेक्चर कर लिया, उसमें आप देखेंगे कि कौन एस्परजिलस के खिलाफ, कौन कैंडिडा के खिलाफ, राइट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप देखें तो सारी ड्रग ओरल प्लस IV रूट से देते हैं, सिवाय आइट्राकोनाजोल के जो कि सिर्फ ओरल रूट से देते हैं, ठीक है बेटा। दिस चार्ट इज़ फ्रॉम योर लिपिन कोड एंड एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस, राइट। दिस इज द समरी ऑफ ऑल वी डिड। ड्रग लेवल्स अफेक्टेड बाय फूड, कौन सी ड्रग्स हैं इनमें से जिनकी एब्जॉर्प्शन फूड से इंक्रीज होती है, तो इट इज़ आइट्राकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल, आइसाविकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल, they are not affected by food, okay. Primary route of elimination, fluconazole from kidney, itraconazole from liver and ultimately in feces, and isavuconazole in liver, then into feces, voriconazole into feces, posaconazole is ओके हेपाटिक मेटाबॉलिज्म होता है बेटा इसका और फिर फीसिस से एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। साइटोक्रोम P450 इनहिबिटेड बाय फ्लूकोनाजोल इज दिस साइटोक्रोम 3A4, 2C9 and all. You don't need to remember this, you just have to read this कि what specific variants of cytochrome P4 are cytochrome P450 are inhibited, okay. हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा जो है बेटा आइसाविकोनाजोल की होती है, ठीक है, और CSF पेनिट्रेशन सब ड्रग्स करती हैं एक्सेप्ट आपकी ये आइट्राकोनाजोल, ओके। that's all about triazoles, right. We'll continue in the next part the remaining triazoles, sorry remaining cutaneous infection कराने वाली cutaneous infection से बचने के लिए जो एंटीफंगल्स होती हैं वो, ओके।